In this video, we will discuss about the queue data structure. We have already discussed about the stack data structure, and this is the queue data structure. Queue is a very useful data structure. It is similar to ticket queue outside a cinema hall, where the first person entering the queue is the first person who gets the ticket. So this is an example of a queue. Let me explain this thing in a more obvious way. So you can see that queue follows the first in first out rule. We'll also discuss this first in first out rule in in detail. Okay. So first let's discuss that what this queue is. So if we will take that, let's say this is a counter. This is a ticket counter. Okay. It is something like this. There is a ticket counter. Okay. So the first person who will enter this ticket counter will first get a ticket and will first move to the movie hall. The second person will get the ticket second, then the movie hall. Means the person which is going first is basically going to watch the movie first. Means first in, first out, which is FIFO. Stack was based on a principle of LIFO, last in, first out. But this is based on a principle of FIFO. And it is just like a pipe. So let's say if we have a water pipe. If this is a water pipe, and if we just start water from here, the water will come. The first droplets, the droplet which will are the first, will first move out. Obviously, if if this is a tunnel, okay, this is a tunnel where only one car can move. So if a car will enter this particular tunnel, so and there is a second, there is another car. So the car which will enter first, वो पहले यहाँ से निकलेगी. मतलब जो basically यहाँ से पहले enter करेगा, वो पहले यहाँ से निकलेगा. ये basic phenomena होता है जिसपे क्यू हमारा वर्क करता है. Again, queue is abstract data structure. It is basically a object of a class. So queue हमारा जो होता है, ये एक कोई primary data structure नहीं होता है. It is abstract data structure. We have to create queue, okay, using other different data structures. तो ये जैसे हम लोगों ने stack में देखा था, हमने stack data structure को जो है arrays की help से implement किया, arrays की help से. Similarly, we will implement this queue data structure too, but with the help of arrays only. उसी के हेल्प से हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे. बट द थिंग जो उसका हमको ध्यान रखना होगा, द प्रॉपर्टी इज बेसिकली दैट द फर्स्ट विच विल बी इंसर्टेड विच विल फर्स्ट विच विल बी exceeded. Okay, that is exactly what we have to do. That is exactly what we have to do. Okay, great. So you can see here there's an example of queue which is given to you. In this example you can see one thing. This is an empty queue. Empty queue means normal. Okay, this is the back. Let's say this is the back of the queue and this is the front of the queue. So whenever we will insert the element in the queue, the element will be inserted from the back. The element will be inserted from the back of the queue. So पीछे से element insert होता है. You can see one is inserted, then two is inserted. As I given you example of car, कि अगर cars insert कर रही होंगी, तो पहले कौन सी कार जाएगी, बाद में कौन सी कार जाएगी. It is basically dependent. Similarly, two insert किया. But when we will DQ, NQ क्या होता है? NQ means in a queue, if we insert element from back, that is called NQ. That operation is called NQ. But what is DQ? When we remove element from queue, that is from the front, ये front है. So when we remove element from the queue, or basically when we DQ element from the front of the queue, that is called DQ operation. So this is the NQ operation and this is the DQ operation. Great, got it. This is how this NQ and DQ operation works. This is how this NQ and DQ operation basically works. Okay, that's all about these two particular operations. Now we have some operations. Okay, we have some different operations for queue also. Just like in stack also, we were having some operations. So similarly, we have that operation on queue also, and I have also written the code. Just like as I have written for a stack, I have also created this file for queue, and we will understand that how this queue works, and we will also run this particular code to know how the things basically work. Okay, so this is what queue is. Okay. The queue is an object, or you can say an abstract data structure. As I told you,
क्यू और स्टैक बोथ आर नॉट इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर। आप बस जाओ और आप एक नया क्यू डिफाइन कर दो, आप एक नया स्टैक डिफाइन कर दो। जो क्यू और स्टैक होता है ये आपकी आप यू क्रिएट अ क्लास, यू बेसिकली क्रिएट अ क्लास एंड यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ग्रेट। नाउ वी हैव एनक्यू। एनक्यू इज अ फंक्शन। एनक्यू फंक्शन क्या करता है? इट बेसिकली एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू। तो क्यू के एंड से अगर हम लोग एलिमेंट ऐड करेंगे, दैट इज बेसिकली डन बाय द एनक्यू फंक्शन। नाउ वी हैव डीक्यू। डीक्यू बेसिकली रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। सो एज आई टोल्ड यू कि जो एडिशन होता है एलिमेंट का, जब हम लोग एलिमेंट पुश करते हैं क्यू में, वो होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द क्यू। एंड इफ वी रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। वो फ्रंट से होता है। एनक्यू एंड डीक्यू बोथ आर टू डिफरेंट ऑपरेशन। Is empty and is full is just similar to what we have in stack. Just like in stack, what we have is empty means agar stack के अंदर कोई element नहीं है, that means the stack is empty. Similarly, if there is no element inside the queue, that means it is empty. Similarly for full also, if the queue is full means अगर queue का जो भी हमारा हमने एक maximum size मान लो define कर दिया, एक queue का maximum size 10 है, ठीक है, और अगर हमने उस maximum size 10 को हमने यूज किया और उस maximum size 10 में चेक करा कि क्या हमारे एलिमेंट्स 10 के हैं कि नहीं है, उसको हम लोग इस फुल बोलते हैं। अगर फुल है मतलब ट्रू करेंगे, फॉल्स करेंगे। पीक, जस्ट लाइक वी हैव पीक इन स्टैक। सो अगर मैं आपको बोलूं दैट द स्टैक, द पीक इन स्टैक, इट बेसिकली रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट। स्टैक के टॉप में क्या होता है, पीक उसको रिटर्न करता है, व्हाट इज इन द टॉप ऑफ द स्टैक। बट इफ वी टॉक अबाउट क्यू, तो क्यू में क्या होता है, इट गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो जो क्यू के फ्रंट में होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो पीक क्या करता है, क्यू के फ्रंट की वैल्यू आपको रिटर्न करता है विदाउट रिमूविंग इट, जस्ट लाइक पीक। तो पीक ऑल्सो रिटर्न द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। रिमूव कौन करता है, पॉप रिमूव द, पीक जस्ट रिटर्न इट। Similarly, here also peak returns the front value of the queue. It doesn't remove it. These are the some functions that are basically present in queue and that will be used. So let's say this is a queue. Currently it's empty, and if I will make, let's say it's name it queue only, so I will write q dot nq 5, and let's say this is the back, this is the front. So I will insert a 5, so 5 will be inserted from here. If I will write q dot nq6, so 6 will be from here. I will write q dot nq8, so 8 will be from here. Similarly, if I write q dot dq, it will just remove this element 5. If I will write q dot peak, so it will tell the front element, not the top, front element. Front क्या है, 5 remove हो गया है, so 6 will be there, so 6 will be the answer. Basically, this is how this concept of queue works. Now we will understand. अब ये तो queue हो गया, but as I told you that queue is not an inbuilt. It is not an inbuilt system. You have to basically build a queue using another data structure. So जैसे हम लोगों ने stack में क्या किया था, if I will talk you the program of stack, you will see here that in stack what we have done was कि हमने एक constructor लिया, उसमें हमने एक items ले लिया था और एक max size ले सकते थे कि that was what is the max size of that stack. Then we have taken some functions like add. So add क्या करता था, add basically add the element in the back of the in the top of the stack. Basically in the back of the array. So हमने एक array ली थी और उस array की help से हम लोग stack को implement कर रहे थे. Similarly हमारे पास एक remove function था, we were having a peak function just like here we also have peak, but वो वहाँ पर last element बताता था, यहाँ पे एक front element बताएगा, what will be the front element. Okay. Similarly we have the check function for if it is empty or not. We have the check function if it is full or not. We have the function to find a size, and we have a function to clear the stack. So the function for clear the stack, to find the check, to find the size, to find the empty, will be same. And I think that peak function will also be similar. Okay, it will be same, and the add function will also be same. The only difference will be the remove function. The remove function will be different. And before talking about this function that we will implement, we have to also talk about some new function, which some new implementation that is basically of arrays. So arrays have some function that we will use here. तो JavaScript में array में हमारे कुछ inbuilt functions होते हैं जो हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करने वाले होंगे, और हम लोग उन फंक्शंस का हम लोग यूज करेंगे, उसको समझेंगे कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं कि हम लोग एक मान लो हम लोग एक एरे लेते हैं, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द एरे।
1, 5, 3, 8, 9, 7, 2. This is the array. Okay. And let's say it's name it ARR. ठीक है, ये हमारे पास एक array है इसका नाम है ARR और ये हमारे पास की हुई, ठीक है. So अगर if we will write ARR dot shift, can you tell me that what it will do? Let's see, ठीक है, let's see. Let's try to run this program. Okay, तो मैं एक काम करता हूँ, I will create shift.js. So what I will do here, that I will create an array first. So let's take let ARR is equal to 2, 4, 5, 6, 7, 10, 22. So first of all, let's just log this particular array. So when you will log it, you will see the normal output will be there. The output will be simple key 2, 4, 5, 7, and this particular output is there. The very normal output is there. Sorry, a very normal output is there. Okay, the very normal output. Let's say if I will do it like this, ARR dot shift. If I will do this, then I will print the array. You will see here that there is some change. Can you just spot the change? Can you just spot the change, that what is the change in this array after making it shift? The change is कि ये पहला एलिमेंट जो था ये बेसिकली डिलीट हो चुका. आप देख लो यहाँ पर इस एरे में जो ओरिजिनल एरे थी और शिफ्ट के बाद में इज अ डिफरेंस इन द एरे, दैट फर्स्ट एलिमेंट इज बेसिकली नाउ नॉट प्रेजेंट. ओके, दैट इज व्हाट दिस शिफ्ट इज. तो शिफ्ट क्या करता है, इस शिफ्ट जो पहला एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट उसको ये रिमूव कर देता, बाकी सारे एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट कर देता. बेसिक क्या करेगा ये, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट लगा दूंगा तो क्या करेगा, ये 5 को यहाँ पे ले आएगा, 3 को यहाँ पे, 8 को यहाँ पे, 9 को यहाँ पे, ऐसे करके हो जाएगा 5, 3, 8, 9, 7, 2. अब 1 जो है रिमूव हो जाएगा. So this shift function is basically used here also in the implementation of queue. तो queue के implementation में ये shift function का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है और हम इस shift function को भी यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं और हम लोग इस shift function को भी यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, ठीक है. तो अब आते हैं फिर से क्यू पे. ठीक है, एंड करते हैं, फिर से क्यू पे आते हैं और क्यू को हम लोग बिल्ड करते हैं किस तरीके से करेंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं क्यू कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक एरे ले लेंगे. लेट्स से हमें जो क्यू बनाना है वो हमारा 6 साइज का होगा. हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल 6 साइज का एरे ले लेंगे. वैसे तो हमारे पास जो एरे की लेंथ होती है जावास्क्रिप्ट में दैट इज नॉट फिक्स्ड, वो वेरिएबल हो सकती है. ठीक है, बट फिर भी हम लोग समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक एरे ले रहे हैं. ठीक है, तो जब हमने एक एरे ले ली, साइज 6 है. ठीक है, तो अब इस एरे में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये एरे है. ठीक है, लेट्स कॉल इट एनीथिंग. हमने क्या लिया, हमने आइटम्स लिया हुआ है. लेट्स कॉल इट आइटम्स ओनली. ओके, तो ये आइटम्स एरे है. अब हम लोग इस एरे का बेसिकली यूज करेंगे एज यू कैन सी आर क्यू. हम लोग एज अ क्यू यूज करेंगे. लेट्स सी हाउ. ओके, लेट्स सी हाउ. दिस इज बेसिकली विल assume this is the front of the array and this is the back of the array. Okay, so guys let's say कि हमें enqueue करना है. enqueue means we have to add a element from the back of the array. हमें array के back से एक element को add करना है. we have to add a element from the back of the array. that is what we will do. तो अगर हमें array के back से एक element को add करना है, enqueue करना है, तो what we will do, हम लोग मान लो यहाँ से एक element add करना चाहते हैं. I will simply use the push operator. हम लोग I will simply write items dot push 5. तो क्या करेगा, यहाँ से 5 को पुश कर, 5 is inserted. If I will write items dot push 9, 9 will be inserted. Similarly 11, 13, they all will be inserted. So basically enqueue is just push. If I will take a array और हम लोग उसमें push करते हैं कुछ elements को, that is exactly what enqueue is. That is exactly what enqueue is. कोई भी छोटा सा भी डिफरेंस नहीं है उसमें, कोई भी छोटा सा भी डिफरेंस उसमें नहीं है. ठीक है, now let's talk about the next thing which is the dequeue operator. अब देखो, this is quite complex. मतलब it was not complex because I have already explained you the shift operator. So if shift is explained, then it is not complex. Then it is not complex. Let me explain it to you. What we are doing here. ठीक है? So see one thing here, that
if we have to make DQ, so what is the meaning of DQ? What is DQ? DQ means that the front element should be removed. जो एलिमेंट फ्रंट में वो पहले चला जाएगा. As I told you, first in first out. सबसे पहले इंसर्ट किया था, सबसे पहले हमने क्या इंसर्ट किया था 5. सबसे पहले 5 जाएगा. तो जो फ्रंट में एलिमेंट है, द फ्रंट एलिमेंट शुड बी डिलीटेड. इन स्टैक के केस में हम लोग क्या करते थे? स्टैक के केस में हम लोग क्या करते थे कि पॉप करते थे. बट पॉप तो तब करेंगे जब हमें लास्ट वाला एलिमेंट हटाना हो. बट हियर इन दिस केस वी हैव टू रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, द फ्रंट एलिमेंट. इस केस में व्हाट वी विल डू, वी विल मेक शिफ्ट. अब समझना शिफ्ट ने क्यों बताया था? दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड शिफ्ट. शिफ्ट क्या करता था? शिफ्ट क्या करता था, वो पहले का जो एलिमेंट है, अगर ये अरे मान लो ये हमारा DQ है, ये हमारा DQ है, ठीक है, मान लो, सॉरी ये हमारा Q है, ये हमारा Q है. In this queue we have to remove the first element, means we have to remove the front. As you can see, we have to DQ element. So I will simply shift it, and if you will just run it, you will see that the final answer will be this, and this first element is removed. This is normally what shift function works. Okay, this is normally how shift function works. How shift function works. Fine. So DQ मतलब basically हम shift कर देंगे, ठीक है. Now similarly we have the normal length. How we can find the size of the queue? So size simply we can just write items dot length, और items dot length बता देगा कितने elements present है in the queue. So items dot length will basically tells us that how many elements are present inside the queue, and that will be basically our size. That will be our size. Similarly, let's say that if we have to check that whether if our queue is empty or not. So if the length is 0, obviously if length is 0 means if no element is present inside the queue, so that means कि our queue is empty. That means कि our queue is empty. That is a very obvious case, a very normal case. Okay. Similarly, is full. What is full? Is full means basically tell you that if your queue is full or not. So is full can only we can only check is full if we have the max size. भाई पता होगा कि मैक्सिमम कितना साइज होगा, साइज क्या है क्यू का, तभी तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि फुल है हुआ कि नहीं हुआ. वैसे तो हमारा साइज क्यू एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है. देन ऑल्सो व्हाट वी कैन डू, अगर हमारे पास मान लो एक मैक्स साइज है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट इफ आइटम्स डॉट लेंथ is equal to max size, that means it is full. So we return true, otherwise we return false. Just like we have implemented this function is full for stack, we will implement it for queue also. Okay. This is how the things flow. Now you will see that whatever we have just discussed is I have already implemented that in code. So first of all, I've taken a constructor. So constructor, as I told you, that we will implement queue using arrays only. In this case also, we will implement queue using arrays, and arrays will be used. So in the constructor, I've basically taken a array which is currently blank, and whenever we will create an object of it, so this basically this constructor will be called, and the items will be created. This is the item. It will be created. Okay, it will be created. Fine. So this is how the things will done. Now the first function is the enqueue function. Enqueue means adding an element at the back of the queue. The back of the queue. So if we are adding an element at the back of the queue, that directly means key. We are pushing an element in the array. So you can simply write this dot items dot push element. So whatever element we want to enqueue, we will just push it in the array given to us, which is item. Okay, तो हम लोग उस items में उसको push कर देंगे. Fine. Similarly, we have DQ. So similarly, we have DQ also. So DQ is basically also present. Okay. So what is DQ? So DQ is simply कि हमें remove करना है front element. We have to remove the front element. So to remove the front element, first of all, we have to check the size. So obviously, if there will be any element present, if there will be top element, then only we can shift. Let's say if the array is already empty, then we cannot check that, we cannot shift the elements. So first of all, we'll check that the length of the array is greater than 1. This is what we have also done in stack. You can. This has been also done in stack. We have first checked if length is greater than 0, then only pop. Otherwise, don't. If it is greater than 0, then only pop. Otherwise, don't pop.
Okay, that's the case. This is NQ, this is DQ, and similarly now we have the peak, which is view the last element. So in peak what we have to view the last element. अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये लोग पीक में भी क्या कर रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट को ये लोग आउटपुट कर रहे हैं, बट पीक में बेसिकली इनको जीरो एलिमेंट को आउटपुट करना होगा ऑब्वियसली, लास्ट एलिमेंट नहीं देखोगे आप। वाई? बिकॉज दिस इज क्यू, क्यू में क्या होता है कि आपको फ्रंट एलिमेंट देखना होगा, तो मैं यहाँ पे इसको लास्ट की जगह फ्रंट कर दिया। ओके, बिकॉज हमें फ्रंट एलिमेंट देखना होगा, to access the front element it is peak. If we have to let's say we have a array, okay, आपको एक array दे रखी है और आपको उस array का पहला element access करना, obviously you will just accept the zero index. That is what is done here. It is just accessing the zero index of the item. Okay, similarly we will have the is empty and is empty functions. Is empty means normally if the length is zero, that means that the queue given to us is empty. That is a very normal case. What is size of the queue? So size of the queue means normally we will just return the size length of the array, and that will be the size of the queue. And if we have to clear the queue means directly we will make the array blank. If we will make the array blank, the queue will be deleted. The queue will be cleared. That's all. Okay. So this is how you can see here. हमने इतने सारे functions use करके in this complete class queue we have written all the functions which are basically required for queue. We have written all the functions which are basically required for queue. Then what we have done, we have taken a object of queue. So let queue is equal to new queue. So we have taken a object of this class queue, okay, and that object will basically be used. What we have done. So first let's forget what we have done below it. First let's discuss top things. Okay. So first we have NQ functions. We have NQ 1, 2, 4, and 8. We have made some NQ operation. That means simply we are pushing something in the back of this array item. So if you will run it, you will simply see that 1, 2, 4, 8 is the answer. You will simply see that 1, 2, 4, 8 is the only answer that we want. Okay. Now let's see if I have done a DQ and then I have logged. Or let's say before DQ, let's see that if we have outputted a peak, then what will be the peak? So you can see this is if this is the queue, so it's back at 8. 8 is its back. And what is the front? Front is 1. And we always access the front of the queue. Always remember. Actually, we insert from back, we access the front. If I will now run this code, it will access the front and you will see that 1 will be the output. Why 1? Because 1 is at the front of it. Or you can say the zero index of the array. तो हम लोग फ्रंट को आउटपुट करेंगे, वही होगा पीक। पर लेट्स से अगर हमने यहाँ पर इसको डीक्यू कर दिया, डीक्यू मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट चला गया फ्रंट का, अब आ जाएगा 2 फ्रंट पे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसको प्रिंट करेंगे तो यू विल सी कि डीक्यू करने के बाद में एक एलिमेंट चला गया, शिफ्ट हो गया एरे, बेसिकली एरे जो है शिफ्ट हो चुकी है। तो इन सी प्लस और जावा हमें काफी कोड लिखना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैनुअली शिफ्ट करने पड़ते हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ। But in JavaScript, we have an inbuilt function that is shift. So that shift function, that inbuilt function, make things more clear. काफी easy हो जाता है आपको समझना, ठीक है? Great. Similarly, guys, we will have different functions like is empty. Is empty function obviously अभी देखो हमारी जो array is empty नहीं है, so it will give you false. Why? Because it is not empty. It has a size of 3. Similarly, we can find a size also. So and size you can say it will be 3 because there were 3 elements present here. You can see 3 elements are present here. So the size of it will be simply 3. Fine. And then we have the normal queue clear thing also here. You will see that after clear, the normal queue will be just normal empty array. And after this, if you will find this is empty function, after this making this clear, it will be true. Why it will be true? Because now in this case it is empty, means it is empty. It is cleared. That means that now the output will be true, that yeah, queue is empty. Similarly, we can also implement the is full function, but for that, as I told you, that we want the max size, because for checking that if
ऑब्वियस बात है, आपको चेक करना है कि कोई चीज फुल है कि नहीं है, उसके लिए आपको उसका मैक्स साइज बताना चाहिए ना कि मैक्सिमम साइज कितना है। ठीक है, लेट्स से मैक्स साइज इज 5, मींस आप 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, और आपने यहाँ देखा हमने 4 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, तो लेट्स इंसर्ट वन मोर। और अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे लॉक करके, एंड वी विल राइट, इफ वी विल राइट कि क्यू डॉट इज फुल, हमने अभी तक इज फुल को डिफाइन नहीं किया, सो लेट्स डिफाइन इज फुल। तो लेट्स डिफाइन इज फुल, एंड हाउ इट इज बेसिकली डिफाइंड एट इफ, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर जो हमारा लेंथ है वो दिस डॉट मैक्स साइज के इक्वल है, इसका मतलब हमारा फुल हो चुका है, हम लोग इस फुल कर देंगे। एंड अगर हम लोग इसको यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखोगे कि आंसर यहाँ पर ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि जब हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए हैं और 5 ही उसका साइज था, हमारे मैक्स साइज 5 था, तो वो फुल ट्रू आ गया, मतलब हमारा जो मैक्स साइज, जो हमारा क्यू है वो फुल हो चुका है। पर लेट्स से अगर हम लोग उसको 10 कर दें तो इन दैट केस वो फुल नहीं होगा, ऑब्वियसली उसकी उसकी कैपेसिटी 10 है। अगर हम लोग अब उसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो आप लोग देखोगे तो वो फॉल्स आएगा, बिकॉज नाउ द मैक्स साइज इज ग्रेटर देन दैट। इस तरीके से हम लोग उसको पूरा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पूरे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। एंड इट इज जस्ट समथिंग सिमिलर जो हमने स्टैक में पढ़ा था, वो एग्जैक्टली सिमिलर थिंग, बाकी सारे तो लगभग बिल्कुल सेम है, बस द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर पीक जब करेंगे तो लास्ट एलिमेंट के बजाय हम लोग फ्रंट एलिमेंट देंगे, और रिमूव करने में हम लोग सिर्फ पॉप नहीं करेंगे, बिकॉज पॉप जो है बैक से रिमूव करता है, बट इन क्यू वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, तो हम लोग शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट क्या करेगा कि सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देगा और फ्रंट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, so that is what we do in queue. Okay. So that is what we have discussed. So we have basically discussed first of all what is a queue. So queue is a very useful, exactly means queue is basically very useful when we solve problems and when we solve DSA problems. So there's a very great implementation of queue. Okay, and that's all we have. And a queue is a useful data structure in programming, and just like a ticket queue, it is like, and I've given an example of a ticket queue also, that the first person who will get into the queue will first get a ticket and first go to watch the movie. Okay, so it is basically based on the first in first out technique, first in first out principle. Okay, just like stack was based on first last in first out, it is based on first in first out rule. We have this queue, we have this empty queue, enq and queue. Is how we make things कि हम लोग हमारा empty queue था, we have enqueued or we can added a element, then we have added, then we have removed from the front. So add हम लोग back से करते हैं, ये front नहीं है, sorry, ये front है, तो हम लोग remove, हम लोग add करते हैं back से और हम लोग remove करते हैं front से। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस है, एनक्यू, डीक्यू, इज एम्पटी, इज फुल पीक, size, or basically basic, these are the functions, and we have some more functions also that we basically use in our implementation of queue, but these are the very basic functions. So queue is, as I told you, is an object of class, it is an abstract data structure. It is not a defined or predefined data structure, it is abstract that we have to create a class, and we have to basically create an object of this particular class queue. Okay, so that is what queue is. Now we have discussed this particular all the functions and how basically queue can be implemented using array. So हमने समझा कि हम लोग array को, stack को हम लोग array के थ्रू से कैसे implement कर सकते हैं. We have also discussed how we can implement queue using array. Okay. So and this was the complete function. You will see that there are there are many similarity between the queue and stack. Okay, that I think most of the functions are nearly same, and some of the functions are only different from each other. Okay, so the data structures are quite similar, they both are the linear data structure, but the only thing is that if we talk about in a stack, we talk about stack and queue. So stack works on LIFO technique, queue works on FIFO technique. In stack we can access the top element, in queue we can access the front element. In stack we can insert from top, and in queue we can insert from back. So in stack we have only one AND open, means only one AND is open, you can see here, and open like this. Here insert is also there, remove is also there, but in queue two ANDs are open like this, insert from here, remove from here. This is basically, so
they both are linear data structure. That is fine. They both are linear data structure, and they both are basically we have implemented it using arrays. But there are some differences between stack and queue also. That also we have discussed. Okay. So sorry, yeah, so this is what we have discussed about stack and queue, and this is the complete implementation of that. So I have also run each and every program because you were having college now at please sir run kar diya kariye. So I have run each and every program of this queue and stack, and that's all guys. So about stack and queue, so you can just check it out, and you can check it out both the definitions of this queue data structure and stack data structure that we have basically used. I hope you have got the video. Thank you.